फर्स्ट जो वैसे तो हमने शेड्यूल किया था 1 सितंबर का, लेकिन जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें ये आ गई थी हमारे पास कि जब हमने कंप्यूटर कोर्सेज हमने स्टार्ट किए तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के हवाले से। लेकिन कंप्यूटर कोर्सेज तो चल रहे थे, उस दरमियान इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फिर हमने उसकी डेट बाद में अनाउंस की, नई कोर्स स्टार्ट करने का सोचा। लेकिन अब मैं एज़ अ कंप्यूटर टीचर हूँ, मेरे लिए इंग्लिश लैंग्वेज करवाना मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवा तो सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स हो तो एक बिल्कुल प्रॉपर जो टीचर है इंग्लिश लैंग्वेज का उनसे करवाया जाए कोर्स। तो इसके लिए आपके प्रॉपर जो एक तरीके से हमने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवाने के लिए हमने एक टीचर से बात कर, जो सर हैं हमारे, मतलब फ्रेंड है मेरे, उनसे मैंने डिस्कस किया था इस कोर्स के बारे में। तो वो इस चीज़ पर एग्री हो गए थे, तो हमने फिर पूरा शेड्यूल रेडी करके फिर फॉर्म इशू किया हमने। फिर 1 सितंबर की डेट मैंने अनाउंस की, फिर हमारा प्लान करके डेट अनाउंस की। तो हमारा प्लान ये था कि अपने 31 अगस्त को जो है क्लास की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, फर्स्ट क्लास की। लेकिन 31 अगस्त को अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारे टीचर थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उस वजह से 31 अगस्त को जो है वीडियो शूट नहीं हो सकी। फिर हमारा प्लान था कि कल जो 1 अगस्त है तो कल 1 अगस्त को शूट करेंगे, लेकिन उनकी तबीयत बहुत मज़ीद जो है बेहतर होने की बजाय ख़राब और तबीयत ख़राब हो गई उनकी। तो हम बड़ा प्रॉब्लम में आ गए थे कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई। अब तो फिर हमारा प्लान किया एक डेट जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के 2 सितंबर कर देते हैं, 2 सितंबर। लेकिन सोचा आज तक उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, लेकिन तबीयत उनकी बेहतर नहीं थी। बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन थी आज का पूरा दिन मेरे लिए कि उनकी तबीयत भी बेहतर नहीं हो रही थी और मैं आपसे कमिटमेंट कर चुका था कि 2 सितंबर से मुझे क्लासेस स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो गई हमारे लिए एक एमरजेंसी में टीचर अरेंज करना हमारे लिए, क्योंकि कमिटमेंट कर चुका था वीडियो अपलोड करनी थी। तो मैंने जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में थे, जो टीचर मैंने उनसे रब्ता किया, तो थैंक यू सो मच सर इस्माइल का कि उन्होंने मतलब उनसे रिक्वेस्ट की। तो मेरी बात रिक्वेस्ट पर उन्होंने जो है कहा कि ठीक है मैं करूँगा ये कोर्स। लेकिन फ़िलहाल आज का दिन बस क्लास थी हमारी, तो हमारी लोकेशंस वगैरह नहीं, टाइमिंग आपस में मैच नहीं हुआ हमारा। वो अपने जहाँ जिस इदारे में वो जॉब करते हैं उन्होंने वहाँ से मुझे वीडियो बनाकर भेजी, और मतलब मैं यहाँ से अपनी लैंग्वेज पे अलग से इंट्रो की वीडियो बना रहा हूँ, वरना अपने साथ बैठ कर जो एक वीडियो बनानी थी मैं आपका इंट्रोडक्शन सर से करवाता। लेकिन वो आज इमरजेंसी है, उन्होंने कहा, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक इशू आ गया है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें इंशाल्लाह मैं उनके साथ बैठ के आपसे उनका इंट्रो भी करवाऊँगा। और आज की जो फर्स्ट क्लास है वो आप पूरी वॉच करें, इंशाल्लाह आपको उनकी क्लास बहुत अच्छे से समझ आएगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर हैं, और अपनी क्लास को वॉच करने के बाद कम्युनिकेशन के स्टार्ट ला सकते हो। ठीक है जी। Assalamualaikum my dear students. I am very happy to welcome to my English language class. I would like to tell you that my good name is Sir Ismail and I have been teaching English for a long time. It is very happiness for me that you have come to my class for learning English conversation. First of all, I want to tell you, we are all students and teachers are very fond of, and there is a phobia of speaking English, but we don't know that for speaking English, for learning English, for writing English, for reading English, we must need some basic steps. We forget the basic steps. First basic steps is that we must know the pronouns. If we don't know the pronunciation, we cannot speak the correct word. We cannot spell the correct word. I am telling you for that one thing. This is the blackboard. You see very well that suppose there is a word K-I-T, key. It is short pronouns. It is short pronouns. Then we add K-I-T-E. We add vowel. So it is long pronouns. Understand this basic friend? Now I'm telling you one thing more. This is cut. C-U-T, cut. It is short pronouns. Short pronouns. And same thing, I write C-U-T-E. It is called cute. It is long pronouns. If we follow these steps, we can speak English. For that, we must know the grammar. And grammar is the foundation of speaking English.
For this we will learn steps. First of all, we will learn the reading power. It is called reading power. In reading power, the first step is our reading power. In reading power, what we have to study and what we have to learn, I am going to tell you. First of all, we should know spell out words. Spell out word means correct pronouns. Because reading power increase our learning skill. And the next thing I am going to tell you is that just a minute, first I guess. Our second step is writing power. When children read out their lessons loudly, the teacher can understand their articulation and their pronouns. If there is any mistake, the teacher can correct it. If you will not read out, if you will not spell out, so how can a teacher can understand that what you want to say and how you want to spell out? You will make very slight mistakes, but these mistakes will make others laugh on you. Then if you get control over writing power, then it needs how to write correct words. Because in these words some letters are not pronounced. They are called silent words. Suppose there is a word K-N-O-W. So K is silent. You will not say kano, you will say no. Before N, K is always silent. Like this, B-A-L-M, balm, A and M. If there is word, there is a letter L between A and M, so L is silent. Balm, calm, palm. You can notice. And there are so many words others. There is one word. Children make many mistakes. C-O-L-O-N-E-L. If you look at this word, it is colonel. But it is the word is the pronounce is that canal. It's pronounced canal. So if you will not speak, you know very well that our pioneers, our leaders, Mr. Muhammad Ali Jinnah, Quaid-e-Azam, and the poet of the age, Allama Iqbal, why did they go to England? Why did they go to abroad? Because they had got degrees here, but they went there for learning pronunciation, articulation, so that they can adjust among them. When they came here, so they were speaking as they are the masters of English. One thing I am going to tell you, one event of Quaid-e-Azam. Once Quaid-e-Azam was traveling in one tanga. So the tanga wala said to Quaid-e-Azam, Mr. Muhammad Ali Jinnah, you speak English, why so stoppingly? The Quaid-e-Azam said that my English is not like tanga wala English. Because when I speak English, so I care for grammar, and for caring grammar, I have to stop. So it means that
when you will speak grammatically English, that is the difference between British English and American English. Because American, they jump. Suppose I am telling you one thing. American say I am going to do this. British say I am going to do this. So American say I am gonna do this. So the same word is in American. In American they write rose, R-O-Z. British they write R-O-S-E, rose. We speak British English. We speak Britain English because the British ruled over the world about 500 years. So there is, you can say, effect, and there is one impact of speaking English. So for speaking English, you must know reading power, writing power. When you will get control over reading power, writing power, then third step comes speaking power. Before this, I would like to ask my students and boys, would you like to ask me any question? Okay, concept is clear. So should I tell you the third step? The third step is speaking power. Now you come to English conversation. Now you have completed writing power, reading power. Now you know very well that how to spell the words, how to read out the words, so that you make others your concept very clear. Now you can speak English any person, because there are two types of English. One is called broken English and one is called spoken English. If you don't know grammar, so you will speak broken English, and if you know grammar, so you will speak spoken English. When you will know spoken English, so you know you can adjust to yourself very advanced people and very moderate people. So then after speaking power, then comes your advanced course, essays, composition. Now you have completed your these all 4 steps. Now would you like to ask me any question? If there is any question in your minds, so I am ready to tell you. Okay, thanks guys.